नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीक धमाकेदार प्रॉफिट बनाया हमने और हमारे क्लाइंटों ने। हमारे हर रिपोर्ट्स में फैब्यूलस प्रॉफिट्स बनाया क्लाइंटों ने। दोस्तों, अगर आपने इस वीक ट्रेड नहीं किया या इस वीक का ट्रेड अगर आप लोगों ने प्लान नहीं किया तो दोस्तों इस वीक में आप लोगों ने बहुत कुछ मिस किया। तो चलिए आइए दोस्तों फटाफट रिकैप करते हैं कि इस वीक हमने क्या किया। हम लोगों ने अपना ट्रेड को कैसे इस वीक प्लान किया था ताकि हम लोग इस वीक उसी प्लान को एग्जीक्यूट करें। जैसा कि मेरा टैगलाइन भी है, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। तो हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था नेक्स्ट वीकेंड पे कि नेक्स्ट वीक अपकमिंग वीक में अपने को क्या करने का है, एंड वी जस्ट एग्जीक्यूटेड आवर प्लान, दैट्स इट। एंड वी डिडंट गॉट टू हियर एनी नॉइस, किसी का हमने नहीं सुना, वी जस्ट एग्जीक्यूटेड आवर प्लान। तो देखिए दोस्तों कैसे हम लोगों ने प्लान आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। वी वर वेटिंग, निफ्टी ने पोस्ट ब्रेकआउट वीकली चार्ट में यहाँ पे कंडिसाइसिव कैंडल बनाया था एंड लास्ट वीक इसके करीब क्लोज दिया था 16,780 और यहाँ पे था 16,688। इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज दिया था एंड वी वर वेटिंग कि इस वीक बस इसके ऊपर बाजार ट्रेड करे। टू बी मोर प्रिसाइजली मैं आपको अगर दिखाऊं तो दिस डेली चार्ट, यहाँ पे पोस्ट बनने के बाद गैप डाउन, द इंडेक्स टेस्टेड इट्स शॉर्ट टर्म ईएमएस एंड देन बाउंस बैक। तो यहाँ पे बाजार बंद हुआ था 27 अगस्त को एंड वी वेर ऑप्टिमिस्टिक कि वी वेर बुलिश की बाजार, क्योंकि एमएससीडी में बाई सिग्नल चल रहा था, वीकली में बाई सिग्नल जनरेटेड था, क्रॉसओवर था, एंड वी वेर प्रीटी मच श्योर कि once these highs will be taken off and market is ready, the index is ready for a big move। and just जैसे ही ये हाइट क्रॉस हुआ 16,718 पे क्लोज हुआ था, बाजार ओपन हुआ 745 पे, 745 को ओपन लो करके जैसे ही बाजार खोला एंड वी वेर इनटू दिस ट्रेड कीपिंग ए स्टॉप लॉस एट अराउंड दिस लेवल। इस कैंडल का 16,600 का स्टॉप लॉस रख के वी वेर इनटू दिस ट्रेड एंड टिल नाउ वी आर राइडिंग दिस ट्रेड दोस्तों। यस, वी आर इनटू दिस ट्रेड एंड मी एंड माय क्लाइंट्स आर राइडिंग दिस ट्रेड। 611 पॉइंट ऊपर बंद हुआ इस वीक, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर अप मूव इन द अपकमिंग वीक इन निफ्टी। वो अपने बात करेंगे आगे एनालिसिस में, पहले रिकैप खत्म कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लानिंग किया था कि once this level should be taken off 36,700, we will add to these positions with a stop loss of around this level 36,200 300। वीकली में भी हम लोगों ने ये देखा था कि 36,400 500 के ऊपर मेंटेन करें, वी आर गुड टू गो नाउ। ओके, एंड इस वीक के हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा या आप लोगों ने मेरे सोशल हैंडल्स देखे होंगे, इंस्टाग्राम में देखा होगा, तो मैं बार बार बोले आ रहा था सुबह सी दिस वीक 28% रिटर्न जस्ट इन अ वीक, 169 पॉइंट्स, अ मार्वेलस मूव। अभी भी ट्रेड ओपन है दोस्तों, ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं किया है हम लोगों ने, वी आर स्टिल होल्डिंग टू दिस ट्रेड। जैसे ही डेली चार्ट में एमएससीडी में सेल ट्रिगर होगा तभी हम लोग इसको प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टिल वी आर होल्डिंग टू दिस ट्रेड। ओके, एंड सेकंड इज लोधा डेवलपर्स। Same pattern, same move as per Suba chart, a return of 197.22%. We are still holding to this trade. We are expecting 1100 or 1150 on the cards for this trade. And in the FNO sector, we are holding to the trades of Adani Port. We have got a signal in daily chart once it has crossed its resistance of 710.20, and we are still holding to this trade. We are believing that the stock should test this highs 800 to 835 or even 900. Just we are waiting for this bullish crossover in weekly chart. Okay, one topic was our Bajaj Finance in the FNO sector. We are holding this from 6,300, but this week also we had entered this trade and we are still holding this trade till we don't get a sell signal in daily chart. Okay, and one of our
picks that we have booked profit was Apollo Hospital. We have booked this profit at around 5,117 odd levels a day back yesterday. Okay, so these were some of the picks that we have enjoyed in the last week, and we are holding to these stocks. We have booked profit in some stocks, but we are holding some of the stocks for much more gains. Okay, friends, now I will not take much of your time. Let us quickly analyze what will be our trade plan for the upcoming week. नेक्स्ट वीक में अपने को क्या करने का है, कैसे पैसा बनाने का है, उसका प्लान अपने करते हैं दोस्तों. सी, यस, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाइस. आप कहीं पे भी सुनोगे, सब कोई बोलेंगे बहुत बढ़ गया है, गिर जाएगा, कभी भी गिर जाएगा, मार्केट करेक्ट हो जाएंगे. दोस्तों, nobody knows what will happen in the upcoming day or upcoming minute or a fraction of second, but we can analyze what the charts are saying and how we'll plan our trade. Okay, see, we have a weekly crossover in MACD and there is a bullish candle. Okay, as long as Nifty is holding to these supports in the daily chart, these supports. Okay, I think the low of 17,072 that has been made, I think yesterday. Okay, and I have clearly mentioned in my blog that 17,050 is a vital support for the index, and index should bounce back from this level. Okay, so you can hold on to your long trades keeping this stop loss in mind, 17,050-60. Okay, and ride the trend. We have got a breakout in weekly chart, and this breakout can extend. It can extend till 17,900 or 18,000 odd levels. Okay, let us quickly dive into the OI data. ओपन इंटरेस्ट में क्या पता चलता है अपने को. See, highest call writer are active now at 18,000. Okay, 17,200 and 300. So in 17,200 put writers are getting stronger and stronger. 17,300 also, yesterday they were not present in 17,300. I guess, let me check it out. No, they were not present at 17,300. Okay, 17,250 there was a call writers, but today put writers are extending their grip in 17,300 also. Okay, so immediate target should be 17,500, and these call writers, when this has been taken off, a short squeeze will take the index towards this level, and our ultimate target should be 18,000 for the upcoming week. Okay, the index will definitely find resistance at this level. So you should keep a stop loss of 17,200 or 17,100, or if you are a positional trader, keep a stop loss of 17,050 and ride the trend till 18,000. Okay, so Nifty is going for 18,000, and hold on to your positions if you are long, and if you want a fresh entry, if you get any dip around 17,200, 17,100, you just need to buy the index, keeping a small stop loss of 17,050. Okay, am I clear? Okay, now we are talking about Bank Nifty. See, yes, today there was a correction in Bank Nifty. The candle is a bad candle, but there is a buy in MACD, and we are having a on the verge of a weekly MACD crossover. Weekly chart have given a breakout of this range. I was waiting for this. This has given a breakout, but this is more importantly, in technical analysis, we want this to be taken off, and this has given a breakout. Now going forward, definitely the index will scalp new highs in the upcoming week. There is no probability, if something bad happens or some bad news comes from in the global front, then there can be a correction. But friends, this weekly breakout should continue, and this continuation should be around till 40,000 in the upcoming 1 to 2 to 3 weeks. Okay, but as of now, for a shorter type of
shorter time frame, you can keep a stop loss of 36,400. Okay, these levels, these levels, 36,400, and ride the trend. First, your resistance will be 37,700, 800 odd levels, the previous highs of February 16th, I guess. Okay, and after that, if this is taken off, your target should be 38,000 to 39,000. Okay, dosto, let us check the open interest data for Bank Nifty. Yes, put writers are accumulated at 36,500, 36,000. 37,000 call writers are acting as a barrier, and once this has been taken off in the coming week, we are sure to go till 37,800, 38,000, this level. We are sure to go there. Okay, dosto, just plan your trade in Bank Nifty. Either you plan with options or you plan with future. Yes, stop loss should be there. When I say it should go, I say stop loss should be placed. There should no open trade. There should not be any open trade without stop loss. You should have a proper stop loss in your system. Okay, dosto. Now, dosto, we'll talk about some stocks for the upcoming week. You can keep SBI Life in your watch list. The higher time frames are suggesting more up move in the stock. Buy on this. Let the stock correct a bit in the upcoming week till these levels, 1190 or 1200. As if you get a price closer to this support, buy here. Keep a small stop loss of 1168 and ride the trend with the stock. The stock can show higher levels in the upcoming week. Reliance. I want to show you the charts of Reliance. Reliance has given a very good breakout, and that is why I am saying Nifty is heading for new highs, because this might be the case that Reliance will take the index to the newer high. See, there is a bullish crossover in MACD in weekly charts, and the stock has broken past its September highs, these highs, and with a very good engulfing bullish candle. As you can say, this weekly resistance has been taken care of, and the stock is heading for 2500 to 2600. Just keep a small stop loss of 23, yes, 2320 or 2300, and ride the trend in this stock. It is definitely heading for 2500 to 2600. Okay, and one bearish stock should be kept in your watch list. That is Mahindra and Mahindra. So should put this in your watch list, as Mahindra and Mahindra has broken its 200 EMA on daily chart, and the probable target should be 680 levels, the 200 EMA on weekly chart. So keep this stock in your radar. If you get an opportunity, just short it with a small stop loss of 750. Once the stock breaks these lows, 726, it is heading for 670 to 680. Okay, dosto. And one cash pick. Again, reality sector. I am loving the movement in reality sector. Sankara Bitcoin. दोस्तों, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद 200 डे में टेस्ट किया, वहां से 4 वीक्स का करेक्शन लिया, टेस्टेड इट्स immediate short-term moving average, and now it's on the verge of bounce back. Okay, there is a bullish crossover of MACD in daily chart with the prices closing above all the EMAs. Now our first target should be 670, and the next target should be 665. This move should be like Sobha and like Lodha developers. Okay, तो दोस्तों, these were some of the trade plans, and I hope आपको मेरा इंडेक्स का एनालिसिस भी समझ में आया होगा. So plan your trade and then trade your plan. दोस्तों, अगर प्लान नहीं करोगे तो मार्केट आवर्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है. सो प्लान योर ट्रेड. अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कहीं पे भी कोई भी लेवल्स में प्रॉब्लम्स होती है या कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है,
You can read my blog at chartertrade.com. मैं रोज इंडेक्स के व्यूज देता हूँ वहाँ पे chartandtrade.com पे, वहाँ पे आप जाइए, मेरे ब्लॉग को पढ़िए, and you will get daily levels in Nifty and Bank Nifty. Okay, and definitely you will get my weekly analysis video also. Okay दोस्तों, have a profitable week. Okay.